starting से Karthik, don't raise your hand. So first question, which game is played with a bat, a ball and wickets on a large field? So the answer is बैट बॉल से हम क्रिकेट ही खेलते हैं, सिंपल है. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ ऑन अ फील्ड इन अ स्टैंडर्ड फुटबॉल सॉकर टीम? एक सॉकर टीम में, वेरी गुड अर्जुन, गुड. इससे पहले अर्जुन का आंसर आया है सॉकर टीम या फुटबॉल कहते हैं उसको. सो दैट इज 11. स्टैंडर्ड फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. बट अगर ये क्वेश्चन होता कि मिनिमम कितने प्लेयर के साथ हम कोई फुटबॉल टीम खेल सकती है, देन एट दैट टाइम द आंसर इज 7. ठीक है, 11 10 प्लेयर्स होंगे तो भी खेल सकती है, 9 प्लेयर्स, 8 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स तक कोई भी टीम फुटबॉल खेल सकती है. अगर 7 से कम प्लेयर रहेंगे किसी भी टीम में तो वो फुटबॉल टीम नहीं कहलाएगी, देन वो किसी फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. So the minimum criteria is 7 and the maximum is, the standard football team is of 11 players. Okay? Now, the answer is 7. सबसे पहले अर्जुन ने दिया. Third question. Which indoor game is played on a checkerboard with piece like, so chessboard? Spelling mistake. Chessboard, kings, queen and knights. Yes, very good, Yakshit. The answer is chess. चेस में किंग, क्वीन, नाइट सभी होते हैं, पॉन्स, रूक. ठीक है, गुड. तो आंसर इज चेस. फोर्थ क्वेश्चन. What object is hit back and forth across the net in a game of badminton? Yeah. Very good. Yakshit Singh. Again, the answer is yes, shuttlecock. बॉल बैडमिंटन में बॉल नहीं होती बेटा, शटलकॉक होती है. ठीक है, ठीक है. Shuttlecock is hit back and forth across the net in a game of a badminton. Good. Now the next question, question number 5. अब इसको रीड नहीं करूंगा मैं, आप लोग खुद बताना. वेरी गुड, वेरी गुड. Not 2 years, in every 4 years. The Olympic Games are held once every 4 years. ओलंपिक गेम्स भी 4 years पे ही होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 years पे होते हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट का हो चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, ये सभी 4 years पे ही होते हैं. ठीक है, T20 वर्ल्ड कप इज एक्सेप्शनल, उसको मत काउंट करो. बट ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, ऑल ऑफ दीज आर हेल्ड वंस एवरी 4 years. ठीक है, इसलिए अगर ओडीआई वर्ल्ड कप दे दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स दे दिया, तो भी आंसर इज, द आंसर इज 4 ऑल्सो, तब भी आंसर 4 ही रहेगा. ठीक है ना. Which famous sport involves swimming, riding a bicycle and running? चलो ये आंसर, और ऑप्शन तो नहीं करूंगा. ओलंपिक में बहुत सारे गेम होते हैं, लेकिन एक ऐसे गेम का नाम बताइए जिसमें स्विमिंग भी इन्वॉल्व होती है, बाइसिकल भी इन्वॉल्व होती है और रनिंग भी इन्वॉल्व होती है, तीनों चीजें होती हैं. मैसेज बहुत सारे हैं बट आंसर अभी करेक्ट नहीं आया किसी. ना, ना.
No. So option is this. Very good. जुबीन. जुबीन का आंसर करेक्ट सबसे पहले आया. द गेम इज ट्रायथलॉन. ट्रायथलॉन में तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. स्विमिंग भी होती है, बाइसिकल भी होती है और रनिंग भी होती है. ठीक है. इस ट्रायथलॉन गेम को दिखाया भी गया है इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में. जो पहली पार्ट, द लास्ट रेस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, में ये तीनों चीजें थी. स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which sport would you use a heavy ball to knock down 10 pins at the end of lane? Wow, very good. Karthik. Karthik Jaiswal. Good. Good. Not basketball. That is bowling. Bowling क्या होती है मैं आपको बताता हूँ. कई बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो जान ले. एक ट्रैक टाइप में होता है और लास्ट में 10, उसको क्या बोलते हैं, 10 वास टाइप में रखे होते हैं. ठीक है. वास नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं. वास टाइप से 10 वास रखे होते हैं एंड आपको बॉल से उसको हिट के गिराना होता है. दैट इज द टारगेट. ठीक है. हाँ. एक बार अगर आपने एक हिट में 10 बॉल गिरा दी तो नेक्स्ट हिट में आपके पॉइंट्स डबल कर दिए जाते हैं. ठीक है. यस, तो आंसर इज बॉलिंग. ठीक है. बास्केटबॉल में नहीं होता ऐसा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country is famous for originating the martial art known as karate? Okay, दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास. एक जापान, दूसरा चाइना. ठीक है. जापान इज द करेक्ट आंसर which is given by the Karthik Jaiswal. The martial art known as karate is originated from the Japan. Okay. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नहीं है भाई, जापान. जापान. नेक्स्ट. What do you score in basketball when you successfully throw the ball through the hoop? Option is here. Okay, sorry. आंसर करेक्ट आया था. सबसे पहले करेक्ट आंसर आया वर 1+, सॉरी 1+, कनक गुप्ता. कनक गुप्ता का मेरे पास सबसे पहले आया. द आंसर इज बास्केट और पॉइंट. सिंपल लैंग्वेज में, अगर जब बास्केटबॉल की नेट जो होती है उसमें अगर आपने एक बॉल फेंका और बॉल उस नेट नेट में से निकल गई सक्सेसफुली, तो उसको क्या कहेंगे? तो नॉर्मल लैंग्वेज पॉइंट या फिर बास्केट. ठीक है. कितना स्कोर मिलता है उसकी बात नहीं हो रही, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है. द पॉइंट गिवन ऑन 2, 3, 5, वो कितनी दूर से बास्केट किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. कई बच्चों का आया 5 और कई बच्चों ने तो गोल लिखा है. बेटा बास्केटबॉल में गोल कहाँ होता है? Now, which sport is played on ice where players use stick to hit a flat puck into a net? चलो बताओ.
वेरी गुड। अच्छा, पता है तुम लोगों को? वेरी गुड। अब सबसे पहले आंसर तो आया मेरे पास, लेकिन नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन पे नेम शो हो रहा है वो शो हो रहा है Vivo V2132। उसके बाद यक्षित सेन का था। हॉकी नहीं है, दैट इज आइस हॉकी। ठीक है। ठीक है। यस। नाउ द 11th क्वेश्चन, which is the closest planet to the sun in our solar system? वेरी गुड कार्तिक। बहुत ही फास्ट आंसर आया है, लेकिन आपके आंसर से जस्ट पहले, आई थिंक मिनी सेकंड का फर्क होगा, कनक गुप्ता का आंसर मेरे पास आ गया था। यस, यू ऑल आर राइट, दैट इज मर्क्यूरी। गुड। नाउ, what force pulls everything down toward the center of the earth so we don't float away? क्या बात। वेरी गुड। वेरी गुड कनक। गुड। द आंसर इज ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा हमें नीचे खींचती है, जिसके वजह से हम तैर नहीं पाते। ठीक है ना। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? वेरी गुड यक्षित। गुड। Yakshit Sen is the first one who gives the correct answer. The process is known as photosynthesis. ठीक है? Good. Now, the next question. What is the large imaginary line that divides the earth into the northern and southern half? वाह, मेरी ज्योग्राफी थोड़ी सी वीक है, so लेकिन इतनी भी वीक नहीं है। कुछ बच्चों ने लिखा है बी 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 बी, तो ऑप्शन तो मैंने दिखाया ही नहीं। द आंसर इज यस, इक्वेटर, बी। वाह, तुक्का सेट हो गया मुझे। गुड। नाउ, okay. Now the next 15th question. Water turns into a gas when it gets very hot. What is this gas called? बताओ। एक आंसर आया था मेरे पास, स्टीम, ऑक्सीजन, वाटर। द करेक्ट आंसर इज वाटर वेपर और स्टीम, दोनों कह सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले जिसने आंसर दिया था दैट इज अभिराज कृष्ण मिश्रा। ओके। ऑक्सीजन नहीं है। Now, which of these is a non-renewable source that we should use very carefully? अब देखो, पहले इसको ऑप्शन देख लेना, आंसर मत देने लग जाना। कहा है विच ऑफ दीज इज अ, अब दीज पहले दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये लो, इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स दैट वी शुड यूज वेरी केयरफुली। क्या है?
गुड, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, वेरी गुड। बेचारे कितने हैं? वंदना तिवारी, सोलर एनर्जी जितनी मर्जी यूज कर सकते हैं। अगस्ता ने अगस्ता ने कोल की जगह लिख दिया कॉल। नो, इट्स नॉट। प्लीज स्पीक लाउड, इंक्रीज योर वॉल्यूम ब्रो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17. What instrument is used by scientists to measure the strength of an earthquake? अर्थक्वेक का को मेजर करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, हीना कौशल, गुड। दैट इज नॉट द स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम अर्थ अर्थक्वेक का की स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट one full rotation on its own axis? Very good, Arjun. So, दो आंसर हैं, 365 days and 24 hours. अब मैं बता दूं, द करेक्ट आंसर इज 24 hours। ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है वो रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। एंड सन की फुल रिवॉल्व करने, सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व कर कंप्लीट रिवॉल्व करने में उसको 365 डेज लगते हैं। ठीक है। यानी एक एक बार अगर कंप्लीट रिवॉल्व करती है अर्थ, तो उसमें 365 टाइम्स अपनी ओन एक्सिस पे वो रोटेट करती है। ठीक है। हम्म। यहाँ पर अपनी ओन एक्सिस पे पूछा है, जिसके दिन और रात होते हैं। दिन और रात दोनों मिला कितने टाइम के होते हैं? 24 आवर्स। जब सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व कितने टाइम में करती है? 365 डेज में। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि चलो सब लोग, ये क्वेश्चन मैं ओरली पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो नेक्स्ट आएगा कि नहीं। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा था? बताओ। हाउ मच टाइम टेक्स द मून टू कंप्लीट अ फुल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में नियर अबाउट 29.5 डेज लगते हैं, 30 डेज के आसपास। यस। ठीक है।
Now, next question. Which animal group has scales, breathes through gills, and lives entirely in water? Yakriti is saying yes. The answer is correct. Fish. Good. What do we call the state of the atmosphere at a specific time, such as cloudy, rainy, or sunny? So the answer is weather. Okay? The answer is weather, not climate. Which is the largest mammal currently living on Earth? डॉल्फिन तो ऑप्शन में ही नहीं है. Yes, B, that is blue whale. Currently, largest mammal currently living on Earth is the blue whale. ठीक है. अब अगर largest animal on land पूछता है, then we say that African elephant या elephant. Longest animal on the earth होता तो हम कहते हैं जिराफ. ठीक है. क्लियर. तीनों में अलग अलग आंसर, तीनों समझ लो आप लोग. On earth that is blue whale, on land that is elephant, और longest is giraffe. Very good. Now, what are animals called that sleep during the day and stay active at night? The यस 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 यस, एक आंसर आया. वरदान तिवारी. गुड. इसमें कहीं भी आउल ऑप्शन में नहीं है. इसमें बोला है व्हाट आर एनिमल्स कॉल्ड द स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड स्टे एक्टिव एट नाइट. उन जानवरों को क्या कहा जाता है जो दिन में सोते हैं और रात में एक्टिव रहते हैं? ठीक है. दैट इज नॉक्टर्नल एनिमल्स. क्लियर. नॉक्टर्नल एनिमल्स जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं. ठीक है. और इसमें सिर्फ आउल नहीं है, इसमें बैट भी है. यस. बैट भी जनरली रात में ही, लेकिन दिन रात दोनों में दिखता नहीं है, लेकिन एक्टिव ज्यादा और रात में ही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bird is incapable of flying but is an excellent fast swimmer? Very good. Yakshit Singh. Penguin. Yes, you are right. Penguin is the correct answer. Penguin is incapable of flying but an excellent fast swimmer. Swimming बहुत फास्ट करते हैं. और कुछ ज्यादा ही ठंडे पानी में करते हैं. The biggest thing. Now, a caterpillar changes into a beautiful butterfly inside a protective shell called a what? एक जो कैटरपिलर होता है वो. वेरी गुड. वीर श्रीवास्तव. गुड जॉब. लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है. So these, not is that is not the lava, that is cocoon. Yes. क्या उसको कहते हैं? क्राइसालिस. कोकून क्राइसालिस दोनों सेम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. What is the only continent on earth where
wild kangaroos live? Very good, Umaza. Good. I'm not going to unmute anyone, so please. Umaza का आंसर सबसे पहले आया. That is Australia. Australia is a continent. You know that. And सबसे ज्यादा कंगारूज वहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम्स को कंगारू टीम भी कहा जाता है. ठीक है. ओके. Now the next question. What type of desert plant has sharp spines instead of leaves to save water? Kanad Gupta. Good. The answer is cactus. Good. Next. Which animal is a carnivore meat eater but belongs to the cat family? Ananya Singh. लो, ऑप्शन दिया तो लाइन आपके उससे हट जाए. लाइन भी होता है, बट यहाँ ऑप्शन में लाइन नहीं है. दैट इज टाइगर. ठीक है. टाइगर इज द करेक्ट आंसर. What do we call the process where an animal goes into a deep, long sleep during the cold winters? वो कौन सा एनिमल है जो विंटर के टाइम में कुछ ज्यादा ही डीप लॉन्ग स्लिप पे चला जाता है? ऑप्शन इज हियर. वो सॉरी, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस? प्रोसेस में पूछा गया. व्हेन एन एनिमल गोज इनटू अ डीप लॉन्ग स्लिप. प्रोसेस पूछा गया, नॉट. सबसे पहले आंसर, सबसे ज्यादा आंसर आए हैं. ओके, अब करेक्ट आंसर आ रहा है मैक्सिमम. So migration is not that the process, that is hibernation. जब जानवर हाइबरनेशन जाते हैं तो सिर्फ एक गहरी लंबी नींद में सो जाते हैं. Which insect lives in a highly organized colonies and is famous for hard work? ये आसान. यस, कौन? वीर श्रीवास्तव. यस, सबसे पहले वीर का आंसर है. दैट इज आंट. ANT आंट. ठीक है. मैं ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा तो ऑप्शन दिखेगा कैसे? ऑप्शन में बाद में दिखा रहा हूं, आंसर आने के बाद. नहीं तो आप लोग गेसिंग करने लग जाओ. और अभी मैं ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑप्शन रहेंगे नहीं. क्वेश्चन होगा, जो सबके आंसर आएंगे तो सिर्फ आंसर आएगा बस, ऑप्शंस नहीं आएंगे. ठीक है. नाउ, व्हाट कलर आर द फ्लेमिंगो फेदर्स मोस्टली ड्यू टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स? Tejas Agrawal, during the class and recording, I'm not going to unmute you. And again, you will, if you message me for unmutation, I will remove you. Yes, you all are right. The answer is pink. Good. Good. Now the 31st question. How many continents are there on planet Earth? Very good. Good job. 7. 7 continents, 7 oceans. ठीक है. दोनों 7 ही हैं. रेनबो में कलर कितने हैं? 7 है. और धोनी के जर्सी का नंबर क्या है? 7. वेरी गुड. अच्छा, अब बताओ,
ऐसा कौन प्लेयर है, वाह थाला, जिसकी जर्सी का नंबर 7 है? धोनी के अलावा, धोनी के अलावा ऐसा कौन सा प्लेयर किसी भी गेम का जिसकी जर्सी का, वेरी गुड अली अख्तर, गुड। रोनाल्डो, रोनाल्डो की जर्सी का नंबर भी 7 है। गुड। चलो, पता है 5 क्वेश्चन कब हुए? 5 क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चंस? ओके, सॉरी 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 सॉरी, दो, देयर आर ओनली 5 क्वेश्चन। थैंक यू अर्जुन। जीके में ज्योग्राफी बहुत, क्या ही बताऊं, वैसे वीक है। देयर आर 5 क्वेश्चंस नॉट 7, माय मिस्टेक। When will the exam happen? Okay. The exam will be in the between 8 August to 18 August. You will get the information. Okay. Now, 32nd question. Wow. Yes, yes, I know, मैंने सर्च कर लिया है, 5 ही होते हैं। सिलेबस की पूछ रहे हैं। There is no out of syllabus. There nothing is out of syllabus. अब तक जितने मैंने क्वेश्चन पूछे हैं मैक्सिमम सिलेबस के ही हैं आपके। हाँ, 10% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या जो कहते हैं थोड़ा सा हायर लेवल पे आएंगे। ठीक है। अगर सब क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे फिर कंपटीशन का मतलब क्या है? नाउ, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ? यस, यू ऑल आर गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज पैसिफिक। गुड। नाउ, which country is famous for building the ancient giant pyramids? वाह, वेरी गुड कार्तिक जायसवाल। गुड। इजिप्ट, इजिप्ट में ही जाइंट पिरामिड्स बनते हैं या बनाए गए हैं। अब पता नहीं बनते हैं कि नहीं, बट पहले जितने अभी तक पिरामिड्स मिले हैं मैक्सिमम इन द इजिप्ट। ना, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? वेरी गुड, न्यू दिल्ली। तो कुछ बहुत आसान भी होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड भी होंगे। फॉर दैट यू कैन check out the practice booklet which is shared in the group. If you didn't receive it, then message me, और जो जिस सिटी में आप हो, जिस या जिस ग्रुप में आप हो उसके एडमिन को मैसेज करिए। ठीक है, आपको बुकलेट, प्रैक्टिस बुकलेट की पीडीएफ मिल जाएगी। हार्ड कॉपी प्रैक्टिस बुकलेट की पूरी बुक जो है वो जुलाई फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। ठीक है। नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the largest continent by both land size and population? लैंड साइज और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से कौन सा है? वाह, आई डोंट नो। पुंज सिंह, आई नो यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो fan, but it's not the class of Cristiano Ronaldo. But Karthik Jaiswal, you're right. That is Asia. Yes. Okay. Good. Now, the third. Next question. What do you call a piece of land that is completely surrounded by water on all sides?
तो सबसे पहले आंसर आया कनक का, दैट इज आइलैंड। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड अब तो इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे आइलैंड अब फेमस भी हो रहे हैं। आइसलैंड नहीं, आइलैंड। आइसलैंड अलग होता है, जहां बर्फ, जो बर्फ का आइलैंड होता है उसको आइसलैंड कहते हैं। इज नॉट। ओके, नेक्स्ट। Which famous structure is a massive wall located in China? Yes, the Great Wall of China. Good. कार्तिक जायसवाल, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर है। नेक्स्ट। Which continent is the coldest place on Earth and is mostly covered in thick ice? Very good, Ali Akhtar. The answer is Antarctica. ठीक है, वहां पर लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद ही रहते हैं। Now, next. What do the color on a standard traffic light means in order? Red, yellow, green. अब ध्यान से पहले सुन समझ लो, ट्रैफिक लाइट रेड येलो ग्रीन का मतलब क्या है। यस, वेरी गुड। स्टॉप, वेट और रेडी, गो। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड ट्रैफिक लाइट मीन इन ऑर्डर। ठीक है, ना व्हाट इज a large body of salt water that is smaller than an ocean is called? ओशियन से छोटी होती है। वाह, गुड। वीर श्रीवास्तव, आई थिंक, एंड श्योर श्रीवास्तव, यस। सो दैट इज सी, SEA, समुद्र, ओशियन, सागर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? वेरी गुड अर्जुन, यस। इन अ लीप ईयर there is a 366 days. Okay, now next. Which primary organ inside your body helps you digest the food you eat? Good. The answer is stomach. Liver नहीं होता है भाई, that is stomach. ठीक है, now next. What type of computer is portable and can be easily carried around in a bag? Very good, very good. That is laptop, 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 not tablet. Now, what do you call a word that describes an action like run, jump, or read? Very good. Grammar अच्छी है. Yes, verbs. Very good. Now the next. How many centimeters are there in a 1 full meter? कार्तिक जायसवाल 1 0 ज्यादा लग गया बेटा। वरदान तिवारी और करेक्ट 100 centimeters in a 1 full meter, 1000 millimeter in a 1 full meter, and 1000 meter is equal to
1 किलोमीटर। ओके, याद रहेगा। वाह, ये कौन है? शिवांश उपाध्याय। इतने जीरो तो गिनते रह जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, which of these materials is a good conductor of electricity? वाह, पहले ऑप्शन तो देख लो। उसने बोला कि इन्हीं में से बताओ कौन सा है। प्लास्टिक, रबर, वुड, कॉपर, मेटल। बिना ऑप्शन देखे सबने मैं कहना शुरू कर दिया, कॉपर 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 कॉपर। यहाँ पे लिखा कॉपर एल्यूमिनियम, तो ना। यस, कॉपर मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, if yesterday was Tuesday, what day will be it be tomorrow? अगर कल ट्यूसडे था तो कल क्या होगा? वेरी गुड, आईफोन अक्षय। यस, गुड। दैट इज थर्सडे। कल मंडे था, वेडनेसडे कहीं और लिख दिया, आज ट्यूसडे। ठीक है, जल्दी करनी, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू अ स्पेस इन अ रॉकेट? आंसर यस, वेरी 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 गुड, एस्ट्रोनॉट। गुड। Now, next question. Which geometric solid shape looks exactly like a playing dice or a Rubik's cube? अब ये इस क्वेश्चन में इसका आंसर है रूबिक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो आंसर क्यूब ही होगा। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ? बताओ। मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ क्या है? दैट इज रेन। ठीक है, नॉट वेल, वेल नॉट वेल, नॉट सी, नॉट ओशन। ओशन और सी में फ्रेश वाटर होता नहीं है, और ना ही फ्रेश वाटर वेल में होता है। ठीक है, रेन। पहली बार सिर्फ एसिड रेन होती है, इसके बाद एसिड रेन नहीं होती है। हाँ, पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो हर बारिश शायद एसिड रेन। ठीक है, ओके।